to really understand Kachhi Ghati, you must understand the fact that the land is desolate, bleak. When you drive towards it, unless you are wearing glares, you feel the heat of the sun, and it's extremely uncomfortable. When you realize that people are actually living there, eating out living, from such harsh natural and geographical conditions, it's really heartbreaking. In areas where there was no watershed earlier, there was a large amount of migration. Migration meant dislocation of communities from their natural places. It meant serious drops in literacy levels. It meant degradation in the level of the women. मेरे पास 12 एकड़ खेती थी, वो सब बंजर जमीन थी और हमारा 12 एकड़ में कोई एक वक्त रोटी नहीं मिलती थी। हम बाहर का काम करने जाते थे और पानी तो था ही ना था बावड़ी में। बाद में हम बाल बच्चे छोड़ के बाहर का काम को जाना पड़ता था। Kachhi Ghati is a small place in Aurangabad, and the project was initially operationalized there. The initial capacity building phase, followed by other phases, have a very strong input of Shramdan. And it is actually this Shramdan which distinguishes the watershed from any other governmental intervention. Because it is during the process of working on the watershed that a transformation occurs and the villagers begin to own the watershed. The project was completed in 2000 and it has transformed not only the land, not only the lives of people, but the way people look at themselves and their self-worth and self-respect for themselves as individual human beings. आणि त्याच्यामध्ये आमचं काम आहे की श्रमदान वेळेवर होतं का नाही, श्रमदान व्यवस्थित होतं का नाही आणि त्यांचं पेमेंट जे टायमावर होतं का नाही, बरोबर माप लोक घेतात का नाही, काम बरोबर करतात का नाही आणि कोणतं जर काम खराब असलं तर आम्ही त्यांना डबल चांगलं काम करून घ्यायचं आणि जेवढं चांगलं काम होईल तेवढा आमच्या गावाचा फायदा होईल. It covered an area of 780 hectares. It involved various interventions like farm bundling, afforestation, drainage, and so on. The ground level water increased in the upper regions of the project by around a meter and in the lower regions by around 6 meters. पाणी पहिले 2 फूट की 3 फूट येत होतं, आता 6-7 फुटाचं पाणी येरीत आहे आता. तेव्हापासून आमचं नशीब वाढलं. The villagers voluntarily agreed that there will be no ban, there will be no tree felling, there will be no free grazing, and therefore the meager resources of the land will be conserved to the extent possible. Also, there is a villagers' participation in all the planning phases, including net planning, land use planning, women's participation, and creation of a small maintenance fund. नाबार्डनी पाणलोटामधून 3,04,000 महिला सबलीकरणासाठी निधी दिलेला आहे. तर त्यामध्ये गॅस सिलेंडर आणि बकरी आणि गांडूळ खत नर्सरी यामध्ये आम्ही बचत गटाला वापरणार. 50-50 रुपये बचत भरल्यावर आम्ही 6 महिन्यानंतर बँकमध्ये कर्ज मागितलं. मग त्याने आम्हाला 25,000 रुपये कर्ज दिले. आम्ही एक बकऱ्या घेतल्या. 10 महिलांनी 10 बकऱ्या घेतल्या. 10 महिलाच्या हातात 4-4 बकऱ्या एकेकीकडे. मग 1 महिन्याला एक जणीला 1,000 रुपये मिळतात आम्हाला. These people who were not even deemed as credit worthy have now formed themselves into groups and in many cases are accessing bank credit and improving their lot through the use of credit. They are people in control of their destiny. मैं पहले से मैं मजदूरी करता था. जब ये प्रोग्राम हमारी इस तरफ आया, इन्होंने बोला मुझे अगर तुम आम के पेड़ लगाओ. मैं आम के 400 पेड़ लगाया हूँ और आम 400 पेड़ लगाया तो पिछले साल मुझे 20,000 की आमदनी मिली इसमें से और ये साल को 25,000 की आमदनी. मी भूमिहीन आहे आणि पूर्वी मला कामासाठी बाहेरगावी जावं लागत होतं आणि आता हे पाणलोटाचं काम झाल्यामुळे आम्हाला इथंच भरपूर मजुरी मिळायला लागली. पहले है ना 4 किलोमीटर दूर पानी लाभ जान पड़ो, पर अब है ना पानलोट क्षेत्र में है ना इतना नजीक पानी आ गया घर का सामना
तो लगेच घर का सामना ससना तो पानी बरकन है। Many other programs are also getting this village. For example, the state government has given a program under Jal Swaraj, that is called sanitation and drinking water program. That is also implemented. One government of India, that one of Prime Minister Rozgar Sadak Yojana is progress. Because of this road, many benefits may automatically come. Their agriculture produce can go to market easily and they get a price. Perishable goods also reach within the time. ऐसी ग्रीनरी पहले नहीं थी, सब बंजड़ी जमीन थी। अभी जो हम जो पहाड़ के ऊपर जो सॉइल वगैरह देख रहे हैं, सॉइल बिल्कुल नहीं थी, सब स्टोनी था। और जो हम मतलब जो खेती देख रहे हैं, मतलब जो चालू खेती है आज, ये पहले ऐसी नहीं थी। पहले मतलब जिस फार्मर को 10 एकड़ जमीन है तो उसमें सिर्फ 2 एकड़ उसकी जमीन चालू थी। जो हमारी जमीन थी वो जमीन हम खाली पड़ती थी, पर अब ये गए साल से समझो अच्छा पानी है, समझो तो हमने अदरक का बीज बोना, तो उसमें समझो हमने 1 किलो अदरक लगाया तो उसका उत्पन्न हमको 10 किलो मिलता है, तो एकदम अच्छा नफा मिलता है। In terms of the self-respect, the self-empowerment, the self-worth that it has given to these people, it is absolutely enormous. So one of the significant impacts of watershed development has been in terms of rural housing and education. School dropout rates have decreased and rural housing has become much better for these people. ये पानलोट क्षेत्र से हमारा खेती का उत्पन्न बढ़ रहा है और हमारे बच्चों को हम ठीक तरह से शिक्षा दे रहे हैं। मतलब हमारा उत्पन्न था साल का मिनिमम 90,000। जब बावड़ी में पानी 12 फुट बढ़ गया पानलोट आने के बाद, तो हमारा उत्पन्न 1.5 लाख के आसपास होता है। They have drinking water all the year round. Their wells have become recharged. The water table has increased. If you look at it in terms of simple visual effect, you see the brown of the Maharashtra, red and brown of the Maharashtra soil on one side and this lush green on the other. It's absolutely like an oasis in the middle of a desert.